दोनों आईडी को बनाओ। The one which is unmuted. One which is unmuted or muted? Unmuted, unmuted. The wrong one. Got it. For the function, good morning to all of you. This is Dr. Kruti Vajir, an entrepreneur of Sai Business Club, welcoming all the people to the very prestigious award, first ever happening from all over the India. Apart from that, we have our associate
from Muscat, Oman. So I'm welcoming and handing over to Praveen, who will be the host of this event. One by one, once your name will be spoken, please start speaking. We will allow you to unmute, accept the procedure. हम लोग निवेदन करते हैं सबका सबसे पहले धन्यवाद जुड़ने के लिए साई बिजनेस क्लब में। ग्लोरी अवार्ड आप सबका तहे दिल से स्वागत करता है और आपने जिस तरीके से प्यार दिया, मैं वेलकम स्पीच के लिए प्रवीण को निवेदन करूंगी कि आप सबका अभिवादन करें और जैसे जैसे आपके नाम बोले जाएंगे, आई रिक्वेस्ट ऑल द पीपल, जैसे जैसे आपके नाम बोले जाएंगे, आप वन बाय वन हम आपको अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे। आप अनम्यूट का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। वी आर प्रोवाइडिंग यू 5 minutes टू स्पीक अबाउट योर प्रोफेशन and your career. Thank you so much. Praveen, handing over to you. Thank you. And we request to keep your videos on. हर एक people जो यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं, videos on रखे, आप लोगों को auto mute कर दिया गया है. Thank you. Okay. Thank you, ma'am. And welcome to all everybody. A dream written down with a date becomes a goal. A goal broken down into steps becomes a plan. A plan backed by an action makes your dreams come true. Hello everyone, I'm Praveen. It's my pleasure to welcome you all the participants today for this SBC Glory Awards function, sponsored by Jyotishpunj and Pulse Clinic. I welcome all eminent speakers and guests from all over the country. This is the first award which is being done in all over the country. We are proud to announce that this conference and this award function, the awardees are joined from various parts of the country. Good morning, ladies and gentlemen. It gives me an immense pleasure to start this auspicious occasion by heartedly welcoming everybody and heartedly welcoming our chief guest, special guest, and chairperson of our SBC, brand ambassadors and associates from all over the India and overseas. Today, we have gathered here for our Glory Award function. Welcome, everybody. I request Sudhanshu or Praveen to share our activity of Sai Business Club. Praveen, I think so you should carry on with the activities of Sai Business Club. Okay, no problem. Okay. Ladies and gentlemen, this is the first virtual group that is performing these many activities, like including from children club to senior citizen club. We have started with many of activities and we will soon start bingo contest also. Then before starting this award function, I would request everybody, they can join with us, they can join SBC gold membership of 1499 in just 599 rupees. Sai Business Club promotes various activities, like we are associated with various social activities also. Then we are performing children club, Japanese language teaching, and many activities like if you want a poster or flyer. So if you go outside, you are searched for a poster or banner maker. So it will cost near about 200 to 250, right? Then, but in Sai Business Club, if you are taking flyers from us, then it will only cost 60 to 70 rupees for each flyer. This is activity. Then Go Mata, ma'am, our Professor Dr. Kruti Wazir has also associated with Go Mata Foundation, which will help for social activities. And also we have many plans for future also. So it's my kind request that everybody should join the Sai Business Club, and we are providing you all for gold membership in just 599 rupees. Thank you, everybody. And okay, I'm proceeding further. I would request our national brand ambassador and former Miss India 2019, Miss Shweta Modi. Miss Shweta Modi, I would request you to please present your thoughts.
Hello everyone. Am I audible to everybody? Yes. Okay. How are you all? Hope you all are doing well. And I'm Shweta Mehta Modi, Mrs. India 2019, and a proud national brand ambassador for Sai Business Club. Glad that I'm part of this club. And Dr. Kriti Vajir, I really want to mention here that you're a very beautiful soul. Thanks for gathering us all together here. And when it comes to awards, for me, awards are, they are actually boosters for encouragement. They strive you more for doing more good work. So awards are always special. And my best wishes to all the awardees, and keep up the good work, do good for human society, and always your bit to the society is very important. So whether it's small or large, but share your content to the society as well. And lots of love to all of you. Praveen. Okay, ma'am. Thank you. Thank you for Thank you. Thank you, your Shweta thoughts. ji. Thank you so And much. then I would request our brand ambassador of SBC State Maharashtra, spiritual life coach, psychic reader, Dr. Jigna Desai, to present their thoughts. Dr. Jigna Desai. हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन सभी को मेरा नमस्कार फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक प्रोफेसर डॉक्टर कृति वजीर for this amazing SBC Glory Award, and this is going to be a happening event on the virtual platform, when we are sitting at home. So I want to thank Kriti Wazir for giving me this amazing opportunity to be here. And let me brief about myself. I'm Dr. Jigna Desai. I'm a spiritual life coach, psychic reader, and a multimodality practitioner. So we all are here into different modalities. So our main aim and main motto of life is to help the people, right? It could be of any modality, but our main intention, motive is to help the people by the alternative therapy. So I think we all are doing the great cause for the people. And I just believe in, helping the people. And I wish you all the best, Kriti Wajir, for this, so many social causes you are doing. And thanks for also, motivating everybody, and even, making us a part of this amazing SBC Glory Award. So I just want to congratulate all the awardees over here and keep up doing the great job. Thank you so much, everyone, once again. Have a great day today. Thank you, Jigna. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. And then next, I would request brand ambassador of state Rajasthan, Miss Vartika Jain, to present their thoughts. Miss Vartika Jain. Please check Vartika ji is there. If she's not there, we can skip her speech. If Vartika ji is not there, we can skip. We can jump. Okay. Then next, I would request brand ambassador of state Gujarat, founder chairperson of Pulse Clinic, as well as acupuncture and acupressure expert, and our sponsor, Pulse Clinic, Dr. Reshma Suryavanshi, to present their thoughts. Handing over to Dr. Reshma Suryavanshi. Just a minute. So smile hello and smile welcome to all the divine soul who have joined us today for this Sai Business Club Glory Awards. I want to congratulate each and everyone who are being awarded today. And my special thanks to Kriti Vajir and her team for organizing this online. And yes, as Dr. Jignaji said, that all of us are healers and we are here to make ourselves better and the universe better. So I wish all of you a very, very good luck that you do this humanitarian work till the last breath. And I wish that we make this world a smile world. So thank you so much and congratulations once again to all the awardees. I just want to interrupt in one thing. I would love to say or maybe express the deepest gratitude to Reshma ji. The way she was continuously in SBC Glory, she gathered a team, she
invited lots of awardees. She was always there. Kruti, I am there no matter if I know how much busy schedule of Shweta ji, Jigna ji, Reshma ji, but they were so greatly in help with me over here. And it is my luck that you all are with me. I'm a really blessed soul to have all of you over here. Thank you so much, Reshma ji, for supporting Thank uh, you. Thank you. from Pulse Clinic. Next. Okay. Thank you, ma'am. And I would request Associate of SBC from State Uttar Pradesh, Founder National President of Ma Ganga Bachao Welfare Society, Dr. Rajneesh Saxena. Dr. Rajneesh Saxena. Rajneesh ji, he's there. Someone is not there, then please proceed, Praveen. We will add them later. Then I would request Associate Media Partner of SBC India and founder of Hello Gujarat TV, Mr. Saraswati Chandra Acharya sir. Mr. Saraswati Chandra Acharya sir. Good morning and warm welcome to all of you. It's a pleasure to be associated with this Gala Award function. I also express my gratitude to Professor Dr. Kruti Vazir, who is founder of Devyak Celestial SBC, Sai Business Club, and she is an acclaimed healer and doctor. And I take this opportunity to wish her a very happy birthday. It's very auspicious day today, and I'm really happy Thank you. with all of you dignitaries on this platform. First of all, I would like to congratulate all the awardees who are receiving this SBC Glory Award, and I like to announce that you guys are amazing, and we, Hello Gujarat TV, would like to highlight your achievements. So all of you who are receiving awards will be highlighted on hellogujaratnews.com with their respective achievements. Wow. Moreover, it's our fortune to have all the brand ambassadors who are very popular dignitaries in their respective areas. And I must thank all of you, thank the organizer that they give me a chance to interact with you. Thank you once again and best wishes. Regards to all. Thank you, sir, for the lovely speech and sparing your precious time to us. Thank you, sir. Then I would request Associate of SBC State Maharashtra, Expert Kodi Ramashastra, Astro Tarot Reader, and International Astro Foundation Women President, Dr. Hina Vijay Oza. Dr. Hina Vijay Oza, I would request you to present your thoughts. We request Hinanji to come on screen and share your thought with us. Is she there? Kruti ji, sorry to interrupt. I think she has messaged that she is not able to open her video actually. All right. I asked her to unmute. Actually, she must be facing certain problem. Hinaji, can you listen to us? Just unmute your mic and we send a ask to start a video and unmute your mic. Both the things I did with you. Oh. I already sent you. I already unmuted to everyone. Can you all able to listen to me? Yes, you are audible, clear. Yes, Didi. I already unmuted everyone. I think so. She must be facing certain problem. Hinaji, you just try to come. Till then, we'll just finish the another lecture.
Praveen, Okay. Then I would request Associate SBC of State Andhra Pradesh and Telangana, founder of Vamsi Holistic Wellness Center, Mr. Vamsi Krishna. Mr. Vamsi Krishna. if some Vamsi sir is not there, then two you can skip, no matter. Okay. Associate of SBC Kurukshetra and Haryana, Mr. Ashwani Gautam. Mr. Ashwini Gautam, are you there? Ashwini, नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम के लिए, और बधाई के पात्र कृति जी एसबीसी ग्लोरी अवार्ड के लिए भी, और इनके जन्मदिन की शुभकामनाएं भी हम इनको देते हैं। thank you. ज्योतिषपुंज ग्लोबल परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और खासकर कृति जी को, जो कि हमारे ज्योतिषपुंज परिवार की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप सब लोग। हमारी शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। छोड़ना चाहूंगी सर, आप 5 सितंबर को होने वाले प्रोग्राम के बारे में बताइए, जहाँ पे हम सबको जो है वो इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम अभी इसके बाद होगा Facebook और इंटरनेट जी प्लेटफॉर्म। जी तो जी जी प्लीज 5 सितंबर 2021 धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ज्योतिष का महाकुंभ होने जा रहा है, जिसके अंदर पूरे देश से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, विद्वान एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर्स, एंजल लीडर्स, हॉलिस्टिक हीलर्स, सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम होने जा रहा है। कुरुक्षेत्र में पहली बार ऐसा महाकुंभ होने जा रहा है, तो कृति जी वहां पर आ रही हैं, और आप सब भी हमारे इस महाकुंभ का हिस्सा बनिए। और बहुत ही अद्भुत ये कार्यक्रम है। मेरा निवेदन आप सभी से कि आप सभी ज्योतिष के महाकुंभ में भाग लीजिए। ज्योतिषपुंज 2021 ऑर्गेनाइज्ड बाय ज्योतिषपुंज ग्लोबल फाउंडेशन। तो ये स्वागत है आप सभी का, और निवेदन भी आप सबसे, आप आए, आपका स्वागत होगा। welcome all people to join the program global जुड़ने के लिए Okay. Thank you, sir. And then I would request Bollywood actor, theatre and film industry, as well as Reiki healer and practitioner, sir, project guide of business school, Mr. Ajinkya Abraham. Mr. Ajinkya Abraham, please present your thoughts. Hello everyone. Am I audible? yes. Yeah, so a very good morning to all. And first of all, thank you so much for inviting me here to the SBC Glory Awards. And Dr. Professor Kruti Vajir, this is for you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Har Har Mahadev. So I would like to introduce myself. I'm Ajinkya Abraham. I'm an actor in theatre and Indian film industry, and a guest lecturer. I'm a research project guide and mentor, handling the research projects of graduation students of marketing, international business, and HR. And Reiki healer, crystal healer, and soon to be angel therapist. So I would like to, like share my and Professor Kruti Vajir's bond. It's like more than 7 years, an unbreakable bond, I'll say, yes. And these 7 years have gone so fast, and like I can't imagine we are still the same, not at all changed. And Professor Kruti Vajir is so positive person that I can't imagine, like I can't describe in words. See, I'm falling short of words actually. So yeah, and I'll congratulate you first of all for
for such great achievements you are like achieving in these times. And now in SBC Glory Awards, I would like to congratulate all the awardees in advance and keep up the good work and do a bit for the society and all. God bless you all. Thank you. Thank you, Ajinkya, for the lovely wishes. And I really appreciate the words you have spoken or you didn't speak. I know the respect and love the way because you are my student as well. And the way you started the journey, how you fought with the society to go into industry and how our support is always there to move on with this. Yes, you are the biggest support of mine. Follow your dreams. There will be lots of hurdles, definitely, because positive energies are always distracted by lots of negativities. But if our goal is very pure, and if you are a pure soul, I think Almighty and Universe is so kind. Thank you so much, Ajinkya, for joining this session. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Then I would request our special guest associate of SBC of State Gujarat, Mr. Suresh Thakkar, to present their thoughts. Mr. Suresh Thakkar. If Suraj is there, please, Surajji. I don't think so. Let's move ahead. Okay. Then associate of SBC of State Uttar Pradesh, Mr. Vikas Tiwari. Vikas ji sent one request, and I think so. Suresh sir is not with us. We request all the other speakers and people to mute their mic so that we can listen for 5 minutes to other people. Thank you. Suresh ji is here. Suresh ji is here. Praveen. Okay. Suresh ji is associate of SBC of State Gujarat and our special guest. So I'd request Mr. Suresh Thakkar to present their thoughts. Mr. Suresh Thakkar. Suresh bhai, if you want to speak, we are giving you the time to speak, or else we can move forward. All right, I think so. He's not ready. Maybe. Let's move. Okay. I would request our special guest, international associate and associate from Muscat, Oman, and healer, Mr. Khushali Somaiya. Miss Khushali Somaiya, please present your thoughts. Hello everyone, good morning to everyone. This is Khushali Gaurang Somaiya from Muscat, Oman. First of all, many happy returns of the day to a beautiful, wonderful and down to earth soul. Because of that, we all are together. Because of her strongest effort, we got an opportunity to share our knowledge and we are able to add colors in other people's life. So my special gratitude to Kruti ji for creating a strong platform called Sai Business Club. She is all-time active, supporting, and she is very down to earth. Anytime for any issue, we can contact her, and we all are healers. We all are trying to add colors in other people's life. So this all credit goes to only Kruti ji for creating an awesome platform. My special gratitude to everyone. We all will try, and together we all will grow. All the best to Sai Business Club. I'm very sure that it will grow more and more internationally. Best of luck to everybody. Gratitude. Have a great time. Khushali ji, thank you so much. You spare your time. I know that Mr. Oman is behind us, and you spare time for me today, for us today, for Sai Business Club. So from Sai Business Club, we are very soon, maybe within 2 to 3 days, if the positive working work will be associated with Bangladesh, Bhutan, and very Asian countries. First of all. So thank you so much, Khushali ji, and to Praveen. Thank you, ma'am. And then I'll go into awardees.
किसी ने बहुत अच्छी बात की है कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, जिंदगी के प्रवीण जी, कई मुझे ले इम्तिहान लीजिए अभी ना, बाकी please. है। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ऐसे हमारे जो अवार्डीज है इनके लिए अभी स्टार्ट करना चाहूंगा। आई वुड प्रवीण जी मेरी रिक्वेस्ट आज हेलो प्रवीण जी, मेरी स्पीच रख दीजिए ना प्लीज, 2 minutes only. ओके there. So I think so as a please, ओके Nama, please proceed. हिना मैम राइट। हाँ, साईं बिजनेस क्लब आज ग्लोरी अवार्ड है, तो मेरी तरफ से सबको जय श्री कृष्ण और सबको बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। और खास कृति जी को, मेरी बेटी है, उसको आज उसका बर्थडे है, तो उसको मैं बहुत विश करना चाहती हूँ कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए और बहुत ही आगे जाए, और साईं बिजनेस क्लब ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको बहुत ही नाम फेम मिले। और ऐसी मेरी शुभकामनाएं। मैं हूँ डॉक्टर हिना ओझा, मुंबई से, और रमन शास्त्र और कौड़ी पे से मेरा वीकली टू फ्राइडे प्रेडिक्शन रहता है ये। और बहुत ही शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। Wonderful. Thank you, Veena ma'am. You are always there. आप चैलेंज के साथ रहे हैं और हमेशा रहेंगे। इंटरनेशनली आपको पता है, हर एक अपडेट आपको पता है, एंड हम लोग बहुत सारा काम करें इंटरनेशनली, जहाँ पे हमें बहुत लोगों को साथ में लेके जाना है। तो थैंक यू सो मच फॉर फाइंडिंग इन प्रवीण अवार्ड। Okay. The best active member award goes to Acharya Bhavin B. Desai. Acharya Bhavin B. Desai. Bhavin ji, are you there? If Bhavin ji is not, Okay. Then the most cooperative member and the most active member award goes to Rita Gandhi. Miss Rita Gandhi. if you are there, please unmute yourself. We would love to. We request people to mute your mic just to not disturb others. Thank you. Rita Happy ji. birthday, Kruti. My daughter's name is also Kruti, and every time whatever कुछ भी जो होता है ना, Kruti कुछ भी भेजती है, I just sign without anything क्योंकि I just love her so much. But साई बिजनेस क्लब में हमेशा मैं मंडे को 3 to 4 आती हूँ कुछ ना कुछ लेके, and every time she supports me and I love her very much. और क्या बताऊं मैं डॉक्टर रीटा गांधी। आप प्लीज के अवार्ड और सर्टिफिकेट आपने पीछे रखा हुआ है साईं बिजनेस क्लब की तरफ से जो आपको मिला है। यस, This is the award and certificate what she got. So thank you so much and a big applause to her. Thank you so much रीटा जी। रीटा जी के बारे में मैं 2 वर्ड ये कहना चाहूंगी कि रीटा जी इज ऑलवेज वेरी मच एक्टिव। जब भी इंसान की एज होती है तो वो डीएक्टिव होना शुरू होता है। मुझे लग रहा है वो रिवर्स जा रहे हैं। आई थिंक सो शी इज गोइंग रिवर्स। वो ज्यादा एक्टिव होता जा रहा है हमारे साथ। एंड द ट्रिमेंडस नॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी, शी विल बी वन ऑफ द पैनल मेंबर इन दैवव्याप सेलेस्टियल क्लिनिक एट ग्लोबल। थैंक यू रीटा जी फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। Then general glory in the field of occult science expert Dr. Raghav Bhatt. Raghav ji is there? Okay, I don't think so. Is there? Okay. General glory in the field of Reiki and angel course, Dr. Anjali Patel. Okay, she's also not there. Please move Then ahead. I'll go ahead. We had मतलब आपने सुना भी होगा और समझा भी होगा कि कविता और राइटिंग जो होती है या फिर लेख जो होता है उससे हमें हर बार प्रेरणा मिलती है। और एक कविता ऐसी भी है कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो तो मेहनत पर विश्वास करो, किस्मत की आजमाइश से तो जुए में होती है। ऐसे ही हमारे कुछ राइटर्स और लेखक हैं जिनको आज हम यहाँ पे अवार्ड देने वाले हैं। जनरल ग्लोरी इन द फील्ड ऑफ पोएट्री एंड राइटिंग, Dr. Meenakshi. Meenakshi ji is there?
think so. She's Okay. Going ahead, general glory in the field of Vastu and Jyotish, healing and tarot card reading, Miss Sonali Chauhan. Sonali ji. No. Next. Okay. Then I would go for Reshma ma'am's Dr. Suryavansh's Pulse Clinic, Dr. Sophia Vora in the field of alternative medicine, Dr. Sophia Vora. Sophia ji. Okay, Reshma ji must be like there. So Reshma ji, you can. Sophia ji is also there. Okay, Sophia ji, please. We are waiting to listen from your end. We request Sophia. She is not. We have to unmute her. No, I she is already- speaking, but I already unmute. Sophia ji, you have to unmute yourself. Which ID she joined? Yeah, it's Sophia Vora already written there. Sophia ji, I sent you unmute request. Sophia ji, asked to unmute. I sent. Please unmute yourself and come. Very Yes. keen. There must be network issues. Please check your network issues as well. Certain things. Okay, we can take someone else. I'll just call her by the time. You can take someone else by then. For sure. Okay. Then second member from Suryavansh's Pulse Clinic, general glory in the field of alternative medicine, Dr. Priyanka Ghosh. Priyanka ji. काफी अच्छा है ये कि एक साथ एक प्लेस पे हम सभी को कनेक्ट करके रखे हुए हैं। डॉक्टर रेशमा सूर्यवंशी जी मेरी मेंटर हैं, सब कुछ उनसे सीखने को मिलता है और इसी बहाने आप लोगों से भी मुझे जुड़ने को मिला, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत अच्छा एक इवेंट किया हुआ है जिसमें कि हम अलग अलग फील्ड वाले जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैम, आपके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, आपका प्रोफेशन क्या है और आप क्या प्रैक्टिस करते हैं? मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका घोष है, मैं नेचुरोपैथिस्ट एंड योग एक्सपर्ट हूँ। वडोदरा डिस्ट्रिक्ट की नोडल ऑफिसर हूँ आयुष मंत्रालय की तरफ से। मेरा जो यहाँ पे मेन फील्ड है वो योग है, योग, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर। राइट नाउ मैं जस्ट एक 1 मंथ बेबी को डिलीवर किया है। सबसे अच्छी बात ये है कि कंटिन्यू डे 1 से लेके अभी तक मैं योग करती रही हूँ, जिसमें कि काफ़ी अप्रिशिएशन सिर्फ मेरी सिटी से ही नहीं पूरे इंडिया से मुझे मिला है। तो ये होलिस्टिक हीलिंग का जो एक है ना, हम लोग विदाउट मेडिसिन भी बहुत चीज़ें कर सकते हैं, तो उसका एक बेनिफिट है। तो इसी फील्ड पे फिलहाल काम करें और आगे भी काम करती रहूंगी। Priyanka ji, we are really blessed to have you over here, and we are inviting to join Sai Business Club as well to promote yoga at international level, because I am a brand ambassador of Spiritual Yoga Guru in Swarna Bharat team. Thank you so much, ma'am, for joining us. Kruti, I would like to add over here that I would like to emphasize that जो उन्होंने बोला कि day 1 से अभी तक मैं योग कर रही हूँ, day 1 means when she got pregnant और उसका last day जब तक उन्होंने deliver किया है, till then she was doing yoga, and she was not only doing yoga, she was promoting yoga and she was taking classes. So it's an inspiration to all the women here that a woman can do anything that she wants to. So Priyanka ji के लिए ये बोलना बहुत ही वो था, and she is also a life member of Heritage Foundation. That is an NGO. I am the president of that NGO right now in Gujarat, and she is a life member for that NGO as well. ब्यूटीफुल, थैंक यू रेशमा जी। मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इतने अच्छे डायमंड्स को आप लेके आए हैं, जिनको हम आगे भी सराहेंगे, और मैं चाहूंगी कि एसबीसी से जुड़े और बहुत सारे लोगों को योगा के लिए प्रमोट करें, बिकॉज इवन आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग योगा फ्रॉम लास्ट 12 to 13 years. So today I'm turning 40, and thank you so much, Almighty. Because of yoga, I don't look like that. So correct, actually. Thank you. Yeah, and Mrs. Vora is ready now. Sophie Vora is also ready now. Praveen, announce her name. Thank you so much, Priyanka ji, and God bless you. Love you so much. Okay, next doctor from
Suryanshi's Pulse Clinic, field in alternative medicine, Dr. Sophia Vora. Sophia ji. Sophia ji, we sent you unmute request. Please accept and come. We are very keen to listen to you. Sophia ji, can you come? All right, I think so. She must be suffering from certain technical issue. Please proceed, Praveen. We'll join her later. Okay. Next member from Suryanshi's Pulse Clinic in general glory in the field of acupuncture, Dr. Satinder Kaur Makhija. Satinder ji. There is a mishap in her family, so she's not able to join today. We can go forward. Okay. Know about that particular awardee from your mouth, please. Satinder Makhija is into alternative medicines past 7 years and doing very wonderfully into acupuncture as well as in Sujok therapy. She is an associate of Heritage Foundation as well as Pulse Acu Clinic, and also she has seen more than 2,000. She has given her service to more than 2,000 patients at clinic and more than 10,000 patients into various healthcare. Wonderful. We are very happy to have such awardees who are continuously practicing for humanity. Thank you, Reshma ji, for introducing that particular awardee. Praveen, next. Okay. Next from Suryavanshi's Pulse Clinic, general glory in the field of holistic healing, Dr. Sarita Maurya. Hello, good morning. Good morning. Happy birthday. Thank you, ma'am. Thank you for joining. So. Thank you for giving me this opportunity. Myself, Sarita Maurya. I'm an acupuncturist, Sujok therapist, and a Reiki healer. Hello. Myself, Sarita Maurya. I'm an acupuncturist, Sujok therapist, and a Reiki healer. I thank Sai Business Club for giving recognition for my work and for this award. And all this credit goes to Dr. Reshma Suryavanshi. She is the one who introduced me and taught and guided me into holistic healing. She always supported and upgraded my knowledge and consciousness. I'm really grateful to her and always will be. Thank you. Thank you, Sarita. Thank you, ma'am. Thank you. It was lovely to have you over here. We request all the other people who are not speaking or not giving a speech to mute your mics. Other eminent speakers. Sarita ji, thank you so much. And I would like to join Sai Business Club for more and more promotions of your activities. Thank you so much. Next. Next doctor from Suryavanshi's Pulse Clinic, holistic in the general glory in the field of holistic healing, Dr. Suresh Kumar Parmar. I think so. Sophia ji is online. First, we should go for Sophia ji's speech. Sophia ji. Yes, I'm Sophia Vora, an acupuncturist and holistic healer. First of all, thank God, and very, very happy birthday to you, Kruti. Okay, I'm really very honored for my superiors for recognition of my work, and a very, very special thanks to my mentor, Dr. Reshma, who was always on my side for teaching and mentoring me. Receiving this award was such a great honor and pleasure to me for recognition of my work. Thanks once again, as Sai Business Club. Thank you so much. Sophia ji, we would like to see you, but you didn't open. Oh, I'm so sorry. Okay. So, am I there now? So, it was a really very honorable moment for me. I'll literally very thankful for everything everyone has done for me, and especially Dr. Reshma. Wow.
So we are also very much thankful, and I just would like to listen certain things what you are practicing, ma'am. Okay, so basically I practice acupuncture, acupressure, and I do sujok also, and I do Yon method, Dr. Yon's method I'm doing, which is a very, very good healing process, like to delete the negativity and emphasizing on strengthening the positivity in ourselves. So that is also a very big booster when I do it with my patients. So first I consult them, then I counsel them, and then they are ready for acupuncture. So it works tremendously all together. So I get very good positive results through that. Thank you, Sophia ji, for Thank you so much. the award function, and I hope you people got your trophy and certificates very soon. I think so. We courier it from here. So Yeah, thank sure. you so much, Sophia ji, and I am It was personally nice meeting you. It was nice meeting you. thank you, ma'am. Join SBC and promote more and more therapies. Sure. Just a minute, Kruti, I would like to add here. Hello. Yes, we can hear. Yeah, Kruti, somehow I am very much of a womanizer, I would like to say. And I would really like to promote more and more women like Sophia. Her husband was into acupuncture and alternative medicine past 45 years into Vadodara. And it's my heartiest condolences to the full family, but a lot of strength to Mrs. Bora that she didn't resign from the work after her husband resigned. And we have been supporting her, and we will be supporting her. And she is really we get an example of the strength to women that she is doing right now. She is continuing the clinic that her husband had started and really doing very, very well. So more and more power to her, and kudos to her. And thanks to Sai Business Club to recognize such women in our community. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. It is done. It is done. It is done. The great universe, it is so kind to help each and every soul on the beautiful Mother Earth. Thank you, Praveen. Please, let's go ahead. Okay. Then next from Suryavanshi Pulse Clinic, General Glory in the field of holistic healing, Dr. Suresh Kumar Parwa. Suresh is there? Yes, he is there. Yes, he's here. Suresh, we are keen to listen to you. Start video and unmute your mic. We can take somebody else. Let us see. I'll just call him. Okay. Next time. Okay. Next from Suryavanshi Pulse Clinic, Ayurveda and alternate medicine practitioner, Dr. Dharmishtha Patel. Dharmishtha ji is here. Somehow not available. Okay, moving ahead. Next doctor from Suryavanshi Pulse Clinic, psychotherapy training, Dr. Khushbu Shah. No, she is also not here with us. Next. Next doctor, General Glory in the field of acupuncture, Dr. Anita D'Souza. Anita ji is here with us. Okay, I would request Anita ji to please unmute your mic and present your thoughts. Hello. Hello, Good ma'am. morning, everyone, and many happy returns of the day. Thank you. Yeah. I'm Dr. Anita D'Souza, and I'm a licensed acupuncturist and Chinese herbalist on board here. I'm working on a cruise line. I've done my PhD in alternative medicine, and I've been practicing for 13 years.
I'm from Goa, and I especially work with disabled kids too. And at present, I'm working as a licensed acupuncturist on a ship. Wow. And I'm very grateful and thankful for my mentor, Dr. Reshma, and because of her, I'm in this field. And I'm with her for 14 years. Oh. She's my inspiration. Whatever I am today, it's because of her. Okay, so credit goes to Reshma. And yes. And thank you for this award. It's my pleasure. Thank you for being here. And I think my internet is an issue because we are in the middle of the ocean. And thank you very much. Thank you, Anita ji, for joining and giving us your precious time, though you are traveling somewhere. Thank you so much. On your voyage, thank you. Yeah. Kruti, I would like to add here that she is the only licensed acupuncturist in India. Because in India, yes, the license registration has not been started. And because she is into the cruise, she is working as an acupuncturist in the cruise. Though she is my student, but she is the only acupuncturist in India, licensed acupuncturist in India right now. Oh, we are very happy to be here, and definitely I'm welcoming you to Sai Business Club as well. Please join SBC and serve the humanity. Thank you so much. Praveen next. Thank you, ma'am. And then next doctor from acupuncture, Dr. Anita D'Souza. Okay. From next Dr. Suryavanshi Pulse Clinic, Dr. Beenal Shah. Alternative complementary medicines and complementary medicines. Dr. Beenal Shah. I would request Dr. Beenal Shah to present their. No, she is not available. She is having her workshop somewhere today, so she is not available right now. What Beenal ji is doing? Beenal ji is into a lot of holistic healing like back flower remedy, as well as Reiki and crystal healing and acupuncture and acupressure. She's also associated with Dr. Santosh Health Clinic at Mumbai. Dr. Santosh Pandey, you know him very well. So she's also associated with him. And Khushbu Beenal Shah also was announced, but both of them are busy together at the same place. Khushbu Beenal Shah is Beenal's daughter, and she is also into acupuncture, and she has done her acupuncture from Open International University of Sri Lanka. And she's also associated with Dr. Santosh's Health Clinic at Mumbai. Wonderful. So nice profile, and we are thanking great personality to enter in our community of SPC. Thank you so much. Next. Okay. Next is about writing. Again writing. जो आने वाले शख्स हैं वो अब तक मराठी साहित्य में बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है, और इनका मानना ऐसा है कि मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे से आंख से हटाती है। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे से आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। ऐसे आई वुड रिक्वेस्ट Dr. Madhusudan Ghanekar from General Glory in the field of art, culture and science. Dr. Madhusudan Ghanekar. Sir. Please present their thoughts. बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गए, तुम जियो हजारों साल है मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू कृति, हैप्पी बर्थडे टू कृति, हैप्पी बर्थडे टू यू कृति। धन्यवाद। Thanks for my award to me, and I am one man show artist, और मेरे 17 देशों में 17 countries मेरे
मोर देन 63,000 प्रोग्राम वन मैन शोज हो चुके हैं। मेरे नाम पर मोर देन 250 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है और 500 इंटरनेशनल अवार्ड्स मुझे मिल चुके हैं। और टॉप 100 में वर्ल्ड लेवल पर टॉप 100 वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकर्स में मेरा बड़ा सम्मान हो चुका है। रेगुलस नाम का एक स्टार है तारा, उसको मेरा नाम दे दिया है। आई एम ग्राफोलॉजिस्ट, पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एवरीथिंग एंड ब्रह्मध्यान आल्सो। मैं विश्व जोड़ा अभियान करता हूँ, पूरे 17 कंट्रीज में विश्व जोड़ा अभियान करता हूँ और आदमी को जोड़ाना, दोस्तों को जोड़ाना ये मेरा काम है। और मैं विशल सिंगर हूँ और गायक भी हूँ। तो एक झलक दिखा के मैं आपसे शुक्रिया अदा करता हूँ। सर और मेरा ये संदेश देके मैं घूमता हुआ हर एक देश में एक लाइन बता के मैं आपको आपका निरूप लेता हूँ। हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान हम सब है भाई भाई। है प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। थैंक यू। थैंक यू मधुसूदन सर, आपने इवेंट में जान डाल दी। made it so live. Thank you so much. And I still remember we met in Pune, Maharashtra, and the way you appreciated me, Kruti, अपने काम के प्रति हमेशा डेडिकेटेड रहना, बहुत आगे बढ़ोगे। So thank you सर, आपका एक सेंटेंस आज भी मुझे याद है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जस्ट बढ़ते जाओ। And you have energy at this level, at this age, and you achieved a lot at national, international level, and I'm blessed to have you. Please keep showering on your Kruti, the daughter. Thank you so much for this. Thanks. Ravi, next. Thank you. Then अंजलि जी को मैं निवेदन करूंगी कि आप अगर बोल सकते हैं तो आपका ऑन करें और माइक अनम्यूट करें। प्रवीण, जब तक अंजलि जी रेडी हो जाते हैं, नेक्स्ट। okay, next for SBC Most Active Member Award, Mr. Nandan Munshi. नंदन जी, नंदन। हेलो, नमस्कार। मैं नंदन मुंशी अहमदाबाद से हूं। मैं एक एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी और क्रिस्टल हीलिंग में काम करता हूं। सबसे पहले आज कृति मैम को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस मौके पर मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूं कि साईं बिजनेस क्लब और कृति मैम ने कई लोगों को ये साईं बिजनेस क्लब के प्लेटफॉर्म पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया है। इसलिए मैं साईं बिजनेस क्लब और कृति मैम का बहुत आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू। थैंक यू नंदन भाई, आपके साथ मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है पिछले 4 सालों में। और जिस तरीके से अहमदाबाद को हमने डेवलप किया है, आज अहमदाबाद में बहुत लोग हमसे जुड़े हैं। मैं मनोज शाह सर रहेंगे अगर, तो उनको भी मैं इनवाइट करना चाहूंगी। मनोज शाह सर धर्म की अनुभूति के जो प्रचारक हैं, जो फाउंडर हैं। अगर नहीं है तो किस तरह से हमने उनके साथ कोलैबोरेशन किया है नंदन भाई?
प्लीज बताएंगे गुजरात में हमने किस तरीके से मैगजीन्स में, जहाँ पे धर्म की अनुभूति 5000 से ज्यादा मैगजीन की कॉपीज जाती है, वहां पे साई बिजनेस क्लब के साथ एसोसिएट पार्टनर होके पूरे गुजरात में अब ये फैलेगा। सो उसके बारे में प्लीज बताइए। धर्म अनुभूति एक स्पिरिचुअल मैगजीन है और उसमें ज्योतिष के अलावा स्पिरिचुअल रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स लोग लिखते हैं वो उसको इसमें प्रिंट होके वो धर्म अनुभूति की मार्फत लोगों के पास जाता है। मैं मनोज भाई के साथ शायद काफी साल से अटैच हूँ, उनको मैं जानता हूँ काफी साल से, और हमारे जो एसोसिएट है गुजरात के सुरेश भाई, उनके साथ भी उनकी मित्रता काफी अच्छी है। तो हमने ऐसा प्लान किया कि हम ये धर्म अनुभूति के मार्फत से साई बिजनेस क्लब का जो प्रचार है, साई बिजनेस क्लब क्या है, वो क्या एक्टिविटी करती है, उनके बेनिफिट क्या क्या है, वो हमने अभी जस्ट शुरू किया है। और धर्म अनुभूति वो काफी अच्छी हेल्प हमें दे रही है इसमें, इसलिए मनोज भाई का मैं काफी आभार प्रकट करता हूं इस बारे में। So much आपने जो एक ब्रीफ बताया, आई एम जस्ट concluding it one word that Nandan Bhai is representing head of Sai Business Club Gujarat. Apart from that, Suresh Bhai is associate of Gujarat state. Apart from that, Manoj Bhai Shah is our media magazine partner, where we associated before 2 days and now already magazine जो slot निकल चुका है। अगर आप में से कोई भी मैगजीन्स के लिए लेख देना चाहता है, राइटअप्स देने चाहते हैं, तो प्लीज एसबीसी के साथ कांटेक्ट करें। आपके जो लेख हैं, जो राइटअप्स, वो हमारी तरफ से प्रमोट होंगे। एसबीसी इज नाउ स्प्रेडिंग विंग्स with lots of other media platforms as well. Thank you so much for joining, Anand bhai. Next. Good morning, ma'am. अंजलि जी, गुड मॉर्निंग। मैं अंजलि पटेल सूरत गुजरात से हूँ और मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, एंजल थेरापिस्ट हूँ, क्रिस्टल थेरापिस्ट हूँ, क्रिस्टल हीलर भी हूँ, टेरो रीडिंग भी करती हूँ, एंजल कार्ड रीडिंग भी करती हूँ। और थैंक यू सो मच कृति मैम और साई बिजनेस हब कि आप लोगों ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। रियली थैंक्स टू यू मैम। आई यू सिंस 3 years और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे मैम, सचमुच लगता है कि वी आर स्पेशल, ऐसा लग रहा है सचमुच। आप लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी दी मैम। We all healers are your support. Universe is मैं हर एक इंसान जिन्होंने मुझे क्रेडिट दिया है, मैं सारी क्रेडिट यूनिवर्स को देना चाहूंगी, द ग्रेट अलमाइटी को देना चाहूंगी। वी आर जस्ट वर्किंग एज अ मीडिएटर। हम जो भी कर रहे हैं ये वी आर जस्ट अ मीडिएटर, वी आर द माध्यम जहां से यूनिवर्स हमारे पास ये करवा रहा है। तो ऑल क्रेडिट गोज टू द लवली एंड काइंड यूनिवर्स। थैंक यू अंजलि जी फॉर योर ब्यूटीफुल स्माइल एंड थैंक यू मैम, थैंक यू। आई ऑलवेज विल थैंक यू। अनकंडीशनल लव। Praveen next. Okay, thank you, ma'am. And then next award, SBC General Glory in the field of Reiki practitioner, Dr. Bharat. Dr. Bharat. Sir Bharat Dave is not trying. We should jump. Next. Okay, then General Glory and our Sai Business Club member, best in field of naturopathy and healing, Dr. Ruhi Sangvi.
Best Programmer Award in the field of naturopath and healing, Dr. Ruhi Sanghi. Ruhi ji. Hello, Kruti ji. Wish you a happy birthday. Beautiful soul. Ruhi ji is so beautiful soul. Thank you so much for joining, my dear. Thank you so much for the honor. Sorry. Hi, Reshma Didi. Congratulations, Ruhi. you a very And happy I'm really birthday. happy to see you at the Sai Business Club. Same here, Reshma Didi. Love you so much. Love you so much. I love Reshma Didi like anything. And Kruti ji, thank you so much for this platform. And it's a beautiful platform where we all together work and all beautiful souls are connected. And by this, I met so many people who are really, you know, you can come out and vibes can connect with each other. And thank you so much for creating such a beautiful platform for all the naturopaths and the healers. So it is really commendable. Reshma, someone who is always charming, loving, and I don't think that I couldn't able to find the word. That word would be only, but the meaning thing is what have you at SBC as well. And I would like to give you one, you know, you can say opportunity. I am not giving the opportunity, the universe is giving. But please start your program on SBC as well. I am inviting all the healers, practitioners, start on SBC. Help me. Exactly. Thank you so much for joining us. Thank you so much. I'm actually working more on children for depression patients. Like I'm working for, especially for the youth, you know, though I'm a healer, I'm into naturopathy, but I'm going through, I'm teaching a lot of youth, you know, stress-free, they should go stress-free and all. So, and main meditation classes for kids. And that is for, in, you know, fun way meditation. Because normally क्या होता है जो normal meditation हम लोग करते हैं तो वो बच्चे बोर हो जाते हैं. So I have designed a new pattern and a new way of teaching them a meditation. So they are loving it. And I have worldwide like my healers, like connections are there. So kids are connected with me and I really feel, you know, lovely working with kids and the youth. So, and I'm a NLP trainer and a practitioner, mindfulness practitioner as well. Wonderful, wonderful. So I'm asking all the people to join Daivabhab Celestial Clinic as well. Daivabhab is guiding the people how to find way, and definitely Reshma ji will be with me. She is always, she is a beautiful soul whom I know, and I'm really, I always, when I see her, I feel so charged up and she's inspiration for so many people. Yeah, all the people are in front of me and I'm blessed to have each and everyone over here and really grateful to everyone. Yeah. Thank you so much. Praveen, Thank you, ma'am. I would request everybody other than awardee to please mute your mic. Okay. So, okay. I would tell everybody joined here that we had chosen people, we had chosen awardees from various categories. So, with us, Hetal Acharya, Ayurvedic practitioner, BAMS doctor is there. Dr. Hetal Acharya. Hetal ji is there. Hetal ji is recognized by President of India and she's running Gurukul Clinic. So I don't think so that she's with us right now. Fine, Praveen, please let's go ahead. Okay, then we have Megha Sharma. Okay, the best Reiki couple award goes to Megha Sharma, the Mr. and Mrs. Sharma in Reiki couple award. Best Master Reiki couple award goes to Mr. and Mrs. Megha Sharma. Mr. and Mrs. Sharma, sorry. Megha is there? Is she there?
I don't think so. She's here. Fine. Next. Okay. The next is Mr. Bhargav. Bhargav, sir, are you there? No, he's not here. I think. Excuse me. Hi, Dr. Kruti. It is about Megha Sharma, Rekhi Kapal Award, or Dr. Preet Sharma? Is it two people are there, or something is missed? I have to check. Praveen, please check. Ma'am, it's Megha Sharma. Megha Sharma Best Reiki Couple Award. Actually, we got the forms and registered. Can you please mute your mic? I think so. We are not talking with Preet. Preet is very dearer friend of mine. Preet is from Dehradun. She's a beautiful soul and she is always end moment personality. She's always a Kruti, मेरे पास time नहीं है, मैं तेरे साथ हमेशा जुड़ी हूँ, but मैं end moment पे and हम लोग रात को 11 बजे तक काम कर रहे थे और प्रीत जी मुझे जुड़ना है तेरे साथ. वो end moment वाले काम होते हैं उनके हमेशा. So Preet ji will definitely recognize you, but अभी के लिए sorry क्योंकि professionalism is there and Kruti Vajir is always known for professionalism. Thank you so much. Praveen ji. Okay, then lastly, I would request Pragya Trivedi in the field of astrology and relationship counselor. Pragya Trivedi. Pragya ji is there. Please, if Pragya ji is there, please come and serve us with your beautiful speech. If she is not there, I would like to welcome few guests of mine. Okay, I am welcoming Priya Mishra. Priya, if you are there, she's right now in Rajasthan. And if Priya is there, Priya, please unmute yourself and start your video. Priya? Yep, she's Hello. here. Hello. Yeah. Hello, Kruti. Happy birthday to you. Thank you, my dear. Priya, tell us about yourself. You are a special guest from my end. So tell us about yourself, please. Myself, international astrologer Priya Mishra, face reader specialist, gold medalist in Ahmedabad. All right. And he is known for solving lots of cases related to lots of things where sometimes indirectly I have to support her as well. So thank you so much, Priya. मुझे पता है बहुत. Thank you so much. Actually, on the way हूँ मैं. Yes, yes. आपने समय निकाला. Thank you so much. Praveen. Yeah. Enjoy your day. All the best. Congratulations. Thank you. मैं इनवाइट करना चाहूंगी क्षितिज दंताले. क्षितिज. Kshitij, if you are there, please come. We want to listen from your mouth. And Kshitij is my soul friend. Kshitij is my part of my life. And he and me, we both started Sai Business Club with a big dream that one day we would take our team to Switzerland and have champagne together. So this is what Sai Business Club. And before a year, when we started, Kshitij and me saw one seed, very small. Today, it is growing like a tree and going to different places of the world. Kshitij, thank you so much for being. You are a stakeholder of Sai Business Club and a very dear friend of mine. Unconditional love to you. You are a Reiki healer, and I just handing over to you. Please, please say something. Namaste, everyone. All the efforts. Yeah, namaste, everyone, and very happy birthday to my dearable and lovable friend in this universe. Yeah, I'll only like that we are seeing a dream, but the dream which has been in success is just because of my lovable friend, of course, Kruti Vajir.
She so tremendously and sincerely worked for since from 2 years. I remember that day that when I told her that, yeah, we will make a Sai Business Club with it should be a very fine and it should go, many members should join in our club. And that was only our motive, that we thought that firstly, when we were going to introduce this club, that we want the members from all over the maximum cities in India. And now it's in fact even international. That's a nice thing. But because we love to contact the people, and all are the stars here. Actually, all are the stars in this club, because there are so many tremendous and senior, and in every field and every work, they are tremendous, positive, and very, very, very artistic. Everyone are very artistic in this or every thing. So I'm very glad to all of you that you all are there, and because of your all support, we are making this a good club here, actually. And because of your all blessings, I think so that we will go, our club will go very nice and very far from ahead, and our dream will very soon will come true, just because of you and my dearable and lovable friend in this universe. Thank you, everyone, and love you all. Thanks a lot. Thank you, Kshitij. We started this club. Thank you, sir. More together. That's why science is together we grow. So, yeah. And we all the people who are here from Friends Science Club to join more and more for the humanity to promote ourselves, and we will definitely soon start workshops at national international level. Thank you so much. And next, Megha is service. Astro Sharma. Ma'am, I would request. Hello. May I go ahead? Om Namah Shivaya Didi, wish you a very very happy birthday first of all. Together we grow. एक छोटी सी शायरी आपके लिए। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, सागर में लहर उठी तेरे नाम की। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए और हमें सबको साथ में लेके जो आप चल रही हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और उतना ही बोलूंगी कि आप बहुत आगे तक जाएंगी, यही ब्लेसिंग है मेरे लिए। और हमारा जो सपना है साई बिजनेस क्लब के लिए, वो भी बहुत आगे तक जाए, यही मेरी ब्लेसिंग्स है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मेघा। आप अपने बारे में बताएं कि आप क्या काम करती हैं और एसबीसी के लिए क्या सर्व कर रही हैं। एसबीसी के लिए मैं पहले तो ये बोलूंगी कि प्लीज एसबीसी से जुड़िए। मैं राजस्थान हेड हूँ एसबीसी की, और स्पेशल थैंक्स मैं हमेशा कृति दीदी को और क्षितिज भैया को करती हूँ कि उन्होंने मुझे लास्ट ईयर जोड़ा था, और मुझे बहुत प्राउड मोमेंट फील हो रहा है आज कि आज हम नेशनल में इंटरनेशनल में बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं, और ये हमारा फर्स्ट ग्लोरी अवार्ड है। तो सारे अवार्डीज को कॉन्ग्रेचुलेशन, सारे एसोसिएट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन, और ब्रांड एम्बेसडर्स, इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर्स सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। और सब अपना अपना जुड़िए अपने बिजनेस को, और जो वर्कशॉप्स हैं सब चीजें लेकर आइए। और मैं हमेशा फ्राइडे पे अपने प्रोग्राम दिया करती थी, बट अब वापस से आई हूँ, कुछ बीच में प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो दिस साइड एस्ट्रो मेघा, और एस्ट्रो नाम भी आप ही का दिया हुआ है, और इस फील्ड में प्रिया दीदी, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, तो इन लोगों के सपोर्ट से मैं बहुत आगे बढ़ रही हूँ। एंड आई एम अ मॉडल एंड एक्टर एंड मिस दिवा ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सेकंड रनर एंड टैरो कार्ड रीडर, फेस रीडर एंड ऑरा रीडर, एंड स्टूडेंट ऑफ कृति दीदी। रेकी मैंने इन्हीं से सीखी है, और बहुत सारे वर्कशॉप्स मैंने इनसे लिए है। सो गाइस थैंक यू सो मच दी। एंड सब अपना साथ जुड़िए, और मेरी मैगजीन भी आ रही है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं मेघा एस्ट्रोपैम के साथ, तो दी से मुलाकात होगी इस चीज के लिए भी। बिल्कुल, राजस्थान का बहुत जल्दी दौरा होगा मेरा। अभी हम जा रहे हैं कुरुक्षेत्र अश्विनी सर के पास, उसके बाद हम जाएंगे राजस्थान, और उसके बाद हम साउथ को कवर करेंगे। बांग्लादेश कंट्री के साथ बात चल रही है, अगर पॉजिटिवली हुआ तो नुसरत जी हमारे साथ जुड़ेंगी बांग्लादेश से। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, और यूके से भी ब्रांड एम्बेसडर जुड़ रहे हैं बहुत जल्द हमारे साथ, जो बिजनेस कपल हैं। तो साई बिजनेस क्लब जिस मूवमेंट पे आज चल रहा है वो सब आप सबकी दुआएं हैं, वरना प्रोफेसर डॉक्टर कृति वजीर कुछ नहीं है। माना कि अंधेरा है,
हालांकि घना अंधेरा है, लेकिन दिया जला सकते हैं लोगों को रोशनी देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रवीण, Just a minute, Kruti. One of our awardee, Suresh ji is available. Suresh Parmar, Dr. Suresh Parmar. So we can unmute him now, Dr. Suresh Parmar. Earlier it was announced, but he was not able to unmute himself. please, Suresh ji, we be really keen to listen to you. Suresh ji. धन्यवाद सभी को। सॉरी बोलना चाहूंगा। नहीं सर। और आपको स्पेशली धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतना सुंदर सा आपने ग्रुप बनाया है, और मैं सच में खुश हूँ कि ऐसे ग्रुप के साथ मैं जुड़ चुका हूँ। मैं खुद भी एक होलिस्टिक हीलर हूँ, रेकी मास्टर हूँ, और कई टाइम से पिछले 20 साल से होलिस्टिक का कार्य कर रहा हूँ। मोस्टली रेशमा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसने मुझे इस ग्रुप में जोड़ने के लिए बड़ी अच्छी प्रेरणा दी। और ये सब सारी आज बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक फैमिली के साथ जुड़ गया हूँ अभी। तो आपको स्पेशली आपको भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये इतनी मेहनत कर रही हो, एक पूरा ग्रुप बनाया है। हम सब मिलके इस फील्ड के अंदर बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, और अभी ऐसे माहौल में ऐसे ग्रुपों की आगे बढ़ने की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। ज्यादा ना टाइम लेते हुए ऐसा प्रोग्राम हमेशा हम लोग बार बार करते रहे, और सबको इंस्पायर मिलता रहे, और सब लोग आगे बढ़ते रहे। इसके साथ सभी को मेरा प्रणाम। परमार सर, माफी चाहूंगी मैं आपसे, बिकॉज आप बहुत अच्छी सोल, आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी है। मैं वाइब्स और ऑरा पे काम भी करती हूँ। आप क्या हील करते हैं ये भी प्लीज बताइए। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। आप क्या क्या हील करते हैं? ओके ओके ओके। एक्चुअली बेसिकली होलिस्टिक हीलर ही हूँ मैं। होलिस्टिक हीलर में मेरा जो मेनली जो काम है वो रेकी से जुड़ा हुआ है। रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ मैं। इंडिया के जो सबसे बड़ा जो एक फाउंडेशन चल रहा है उसी के साथ मैं जुड़ा हूँ, और रेकी हीलिंग फाउंडेशन न्यू दिल्ली से। उसके साथ साथ वास्तु के अंदर भी बहुत अच्छा सा काम हमारा चल रहा है। 3D वास्तु करके हम एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं हम लोग, जो एक अलग तरीके का वास्तु, पूरा साइंटिफिक तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो इस प्रकार से भी और काम कर रहे हैं। मेरे साथ मेरी एक कलीग जोड़ी हुई है, डॉक्टर धर्मिष्ठा जी, शायद आज उपस्थित नहीं हो पाई है। वो आयुर्वेद और योगा से पूरी जुड़ी हुई है। तो हम दोनों मिलकर यहाँ पे होलिस्टिक हीलिंग इंस्टीट्यूट करके एक संस्थान चला रहे हैं सूरत के अंदर पिछले 17 साल से। तो बहुत ही अच्छा मतलब में काम हो रहा है, और जैसे अभी आप लोगों जैसे ग्रुप के साथ जुड़ गए तो और भी अच्छा कर पाएंगे। अभी मैं निवेदन करूंगी जो भी लोग सूरत से जुड़े हैं या यहाँ से भी जुड़े हैं, आप सबके नंबर इस मीटिंग के चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हम लोग पर्सनल कांटेक्ट करेंगे, पर्सनल अभिवादन करेंगे आप सबका मोबाइल नंबर जरूर यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल दीजिए, जिससे कि हम आपको पर्सनल धन्यवाद कर पाए, क्योंकि हमारी एसबीसी की सर्विस कांटेक्ट करेगी इस चीज के लिए। तो आपसे सबसे निवेदन है कि आप पर यहाँ पे चैट बॉक्स में एक्सक्यूज मी मैम, सुरेश सर मेरे भी गुरु है। आई एम अंजलि पटेल। सुरेश सर मेरे भी गुरु है। ही इज अ डिवाइन सोल में। मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस मिला है उनसे। थैंक यू सर, थैंक यू सुरेश सर। को देख के ही लग रहा है, मैंने इमीडिएटली बुलाया। थैंक यू सर, थैंक यू। परमार सर को देख के ही लग रहा है बहुत ही अच्छी। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। Okay, thank you. Then I would जी, go इनके to साथ last जो and डॉक्टर correct my धर्मिष्ठा station. जी हैं, प्रवीण रश्मि जी कुछ। इनके साथ डॉक्टर धर्मिष्ठा जी जो है वो भी हमारी अवॉर्डी थी। दोनों साथ में ही काम कर रहे हैं। एंड जितने डिवाइन सोल सुरेश जी है, उतनी ही डिवाइन सोल धर्मिष्ठा जी भी है। शी इज आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो आयुर्वेद के साथ साथ वो रैकी भी कर रही हैं, और दूसरे होलिस्टिक मॉड्यूल्स को भी कर रही हैं। शी हैज बीन इनटू जो हमारा आईपीडी होता है गायनोकोलॉजी का, सो एज गायनोकोलॉजिस्ट के साथ भी उन्होंने काफी काम किया है, और काफी सारे प्रोग्राम्स हेरिटेज फाउंडेशन जो है उनके साथ मिलके फीमेल्स के लिए किए हैं। सो वो अभी आज अवेलेबल नहीं हो पाई है, बिकॉज उनका जो ओपीडी है वो आज भी चालू है, इसलिए वो नहीं हो पाई। लेकिन बोथ ऑफ देम आर वर्किंग टुगेदर इन सूरत, डॉक्टर धर्मिष्ठा जी एंड सुरेश जी दोनों। थैंक यू। हेलो रेशमा बेन, प्लीज मुझे नंबर। अच्छा, या धर्मिष्ठा जी ऑनलाइन हो गई है। यस या धर्मिष्ठा जी बोलिए। जी पहले तो नतमस्तक हूँ, धन्यवाद करती हूँ आप जुड़े हमारे साथ। प्लीज। हाँ, ओपीडी की वजह से ही जुड़ नहीं पाई थी, लेकिन जस्ट अब मैंने अभी मैसेज देखा रेशमा जी का, तो फिर मैंने सोचा चलो अभी 10 मिनट के लिए कुछ टाइम निकाल लेते हैं।
थैंक यू सो मच। आपने हमको इस काबिल समझा और इसके लिए अवार्ड के लिए हमको काबिल समझा, उसके लिए सबसे बहुत 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 धन्यवाद। और स्पेसिफिकली रेशमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने आपका रेफरेंस उनके थ्रू ही हमको मिला था। तो सबसे पहले रेशमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। रेशमा जी भी मेरी गुरु है, काफी कुछ मैंने उनसे सीखा है। तो अभी इस फील्ड में और ज्यादा अच्छा क्या कर पाते हैं वो देखना है हमें। थैंक यू सो मच। We all are gratitude. We all are. उन्होंने इतनी है इंसान वही आपको कितने ऊपर उठ चुके हैं। डेफिनेटली और एक चीज बताना चाहूंगी कि रेशमा जी ने किस तरीके से सपोर्ट किया है एसबीसी ग्लोरी अवार्ड में, उसके साथ जिन्होंने बेस हमारा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। Okay, thank you, ma'am. And I would request everybody to please mute your mic other than awardee. Then I would apologize to everybody, and I would want to correct my mistake. The best Reiki couple award goes to Mr. and Mrs. Sharma, and I would request Preet Sharma ma'am to present their thoughts. Preet Sharma. प्रीत जी का एक वीडियो हम लोग शूट करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि मुझे उनका ये आया नहीं है, कंफर्मेशन नहीं आया था, तो हम प्रीत जी को डेफिनेटली बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे, नो प्रॉब्लम। नाउ मनोज शाह इज हियर फ्रॉम अहमदाबाद, धर्म अनुभूति मैगजीन। मनोज जी, आप कुछ बताना या बोलना चाहेंगे अगर आप आना चाहते हैं तो? आई थिंक सो ही इज हियर बट आई एम नॉट प्रीटी श्योर। Okay, fine. Praveen, I would like to handing over to you with another activity of Sai Business Club. Represent कीजिए Sai Business Club क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है अभी। Okay, ma'am. Thank you. And मुझे साई बिजनेस क्लब के साथ जुड़े हुए बहुत दिन है, एज एडमिन हेड काम कर रहा हूँ, और सभी को ये बताना चाहूंगा कि साई बिजनेस क्लब जो है अभी नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे जंप कर रहा है, और मस्कट ओमन से हमारे साथ एसोसिएट जुड़ चुके हैं, और बहुत सारे देश, दूसरे देश लाइक अभी मैम ने बताया यूके से और बांग्लादेश से भी जो एसोसिएट्स हैं वो अभी जुड़ रहे हैं। सो आई वुड एंड आप सभी के लिए ओनली 1499 वाला जो ऑफर है वो हम आप लोगों को, मतलब गोल्ड मेंबरशिप है वो हम आप सब लोगों को 599 में दे रहे हैं। इफ यू वांट टू जॉइन देन यू कैन कांटेक्ट अस। चलो, सो अभी हम लोग एंड करेंगे विथ नो मैम, प्लीज वेट, आई वुड वांट टू गिव चांस टू present their thoughts. Preet Sharma ma'am. प्रीत जी। प्रीत जी, if you are there. Ma'am, wait. I think some network. Just a second. Okay. Very happy birthday to Dr. Kruti, my darling friend and my sweetest, you can say, रेखी बहन कह सकते हैं हम। और आई एम वेरी हैप्पी कि लास्ट मिनट कॉल भी मेरी कृति हमेशा लेती हैं। दो आई एम ए प्रेसिडेंट ऑफ मेनी इंटरनेशनल स्टेट्स, तो कहीं बहुत ज्यादा बिजी रह जाती हूँ, बट डॉक्टर कृति आई एम विद यू इन एवरी ईच स्टोन। कभी नाम भूल जाओ तो रखना ही है हमारा नाम और साथ देना ही है हमने आपका। एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे बिकॉज हम जो काम करते रहते हैं दिन रात, वी आर हीलर्स, all are healers, all are
capable of doing everything. I know all are equally designated as the same, but some energies are there. जब आपको कहीं ना कहीं recognition एक चाहिए होता है, to spark yourself, वो डॉक्टर कृति करती हैं हमेशा. This is my second award with her. Last time she gave me platinum award. This time Reiki Couple Award. So very thank you to Dr. Kruti and her whole team. And जो साइन बिजनेस क्लब का एक एजेंडा है कि सबको इंस्पायर बिजनेस देना, ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है. एंड ये मेरा रिटर्न गिफ्ट है शायद, या डॉक्टर कृति को गिफ्ट है. आई एम ऑल्सो ज्वाइनिंग साइन बिजनेस क्लब फाइनली. थैंक यू सो मच. एंड आज के दिन हाँ करना, मुझे लगा मजा आ जाएगा बिकॉज ये मेरा रिटर्न गिफ्ट मिलेगा. आपके लिए तो है ही एक अच्छी बात कि हम ढंग से अच्छे से एक साथ मिलके कुछ कर सकें. Because you always be a friend of me instead of so many things. आपने कई बार कहा कि जुड़ो जुड़ो, but you know time frame से शायद I think universe एक दिन चुन रहा था. So your birthday, I'm giving you gift and taking the gift to be a part of Science Business Club today. Thank you so much. And I'm a Reiki healer, Reiki grandmaster. I'm a crystal ball gazer. I'm a tarot reader, rune reader, and I'm working from this in my holistic field for last more than 30 years. I was very small, only 12 when I start my tarot reading as a gift of my London auntie friend, but it becomes my passion. So I'm really thankful and happy to be with Dr. Kruti Sai Business Club and everybody today. And such a beautiful stars today. I'm very happy for this. And Reiki Couple Award, it's a really honored because we do, we don't sleep for writing whole night some days when we do healing. So that is something people say it's a miracle, because when people together as a husband wife doing something in a very dedicated form, the universe also give you a blessed. I feel so, because at that time, I don't know what power is there, but some power is there which I feel connected with the soulmate. This energy also connected us with as a Reiki healers together. So whatever we do together, and whatever we recover, whatever we succeed together, not only in life, but also in my healing part. So I'm thankful. This is the most recognizable award for me as a Reiki Couple Award. Thank you so much, Dr. Kruti, once again, and Sai Business Club, and every team of and every person who is joining today. A warm thankful to everybody. थैंक यू सो मच प्रीत. आपके बारे में एक वर्ड बोलना चाहती हूँ. यू आर द लवलीएस्ट सोल. क्योंकि जो हक से भी छीन ले वो दोस्त है, और आप हक से छीन लेती है प्रीति के पास. तो वो झगड़ा हमेशा प्रीत मेरे साथ करती है, और वो हक है दोस्ती का. एंड बहुत लकी हूं मैं, कैसे दोस्त मिले हैं मुझे, और मेरी बर्थडे पे स्पेशल विश मुझे उन लोगों से मिल रही है जो इतने बड़े बड़े हीलर्स हैं. और मैं आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहूंगी, क्योंकि मेरे दुश्मन काफी हैं. मतलब मैं मानती नहीं किसी को मेरा दुश्मन, लेकिन लोग मुझे बड़ा दुश्मन मानते हैं. प्यार फैलाना हमें, और मैं निवेदन करूंगी कि सिर्फ और सिर्फ प्यार ही फैलाएं. लोग आपके बारे में 10 चीज आके बोलेंगे, आप काम में व्यस्त, मस्त और जबरदस्त जरूर रहें. मैं धन्यवाद करूंगी हर इंसान को आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी है. आई एम रियली ग्रेट. थैंक यू प्रीत. थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन. डॉक्टर कृति, मैं एक बात कहना चाहूंगी. एक तो नितिन जी अपनी 2 लाइनें कहेंगे, और दूसरा, अब आपके दुश्मन के आगे हम खड़े हैं. क्या बात है. मैं दुश्मन किसी को नहीं मानती हूँ, सब मेरे ही हैं, पूरा यूनिवर्स मेरा है. लेकिन जो मुझे मानते हैं उनको भी नतमस्तक है. लीजिए, आप नितिन जी के 2 शब्द सुन लीजिए बस. नितिन भैया नमस्कार. हाँ जी, नमस्कार सभी साइंस को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मैं, और जन्म हार्दिक शुभकामनाएं. और आपने से कहते हैं ना, सभी महत्वपूर्ण मोतियों की माला जो बना ली ना आपने, वाकई हेड्स ऑफ करता हूँ मैं आपको. और आप इसी तरह जिंदगी में तरक्की करें, हम सबका साथ आपके साथ रहेगा. मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. थैंक यू नितिन भैया, थैंक यू सो मच. आपके ब्लेसिंग्स बहुत मैटर करते हैं मुझे इस दिन. सो मैं धन्यवाद करती हूँ. प्रवीण, हैंडिंग ओवर टू यू. Okay. Then I would request Professor Dr. Kruti Vazir to present vote of thanks. Handing over to Professor Dr. Kruti Vazir. Ma'am. Requesting other people to mute the mic.
not harassing everyone, just taking 2 minutes and then we can apart. No words after all these speeches. I think so. This is my, fortune. This is my luck. This is Professor Dr. Kruti Vajir, an entrepreneur of Sai Business Club, a founder and a chairperson, expressing gratitude to the great, great Almighty and the universe. First of all, starting with the speech of Shweta Mehta Modi, Jigna Desai, Reshma Suryavanshi ji, and Ajinkya. Thank you so much. You people are, I know how much busy, but you still gave your precious time. And if someone is giving time to you, he or she is giving the life to you. So you made me so precious today that you gave your life to me this much time. So really gratitude from core. Apart from that, Dr. Rajneesh ji, he is not here, but he is a very busy person, national, international recognized personality from Real Group, Ma Ganga Bachao, and lots of where I am representing as a brand ambassador at international level. Saraswati sir, who is a founder of Hello Gujarat, media partner. Hina Ma, thank you so much for joining. Vamsi sir is not here, but he's from Karnataka, our associate partner. Then Ashwini Gautam sir, Jyotish Punj, Haryana and Punjab representative with us. And I am a vice president of Jyotish Punj. So thank you so much, Ashwini sir, for always pampering me as a friend and a younger sister. Rather, I am the elder one. Thank you. Next speech by Suresh ji was not there. Vikas Tiwari sir is not there, but Kushali ji was there with us. Kushali ji, I don't think so that it is certain kind of things we did, but it's a gimmick by universe, or it's a blessings from the great Almighty and universe that we both connected, and today we will start business definitely soon in Muscat, Oman. Thank you so much, Shiti Dantale, who is my near and dear friend. Thank you so much, my whole family. Thank you so much, Praveen. Thank you so much, Sudhanshu. Thank you so much, my all IT members, my teams, my spouse, Mr. Digesh Wazir, who is always there to support me, my parents, and the great, great, great Lord Shiva and Shakti, great Almighty and universe. We are coming with lots of new projects, and forget about the rumors, see the fact and focus of Dr. Kruti Vajir. Thank you so much and have a nice time. Thank you, Praveen. Thank you, everybody. Over to you. Thank you so much. We are ending the meeting. Yeah. I think so we will definitely send lots of couriers after this. So if you got your awards and certificates, please share your video and with your awards and certificates. So we'll promote it as well. Thank you so much. Thank you.